Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm back again with another video and another vlog. In this vlog we are going to explore a town in Bavaria. This is my first time I'm going to explore those places and we are going to do it together. Let's go. Just closing my door and then let's go. It's going to be interesting. This is how my apartment looks. I am on first floor right now and we are going to walk towards the ground floor. And this is how my ground floor is. This is the main entrance. And now this is the outside area. And this is the backyard of my building. It's beautiful. There's a place to sit. So now we are walking towards the river. We have one river nearby. While on the way there is also a small park over here. I mean just a small park. There's nothing much over here. Basically to reach the city center there are so many different ways. But out of those I'm just going to cross this way. This is also residential area. Residential area में आ चुके. घर दिखाती हूँ. इतने खूबसूरत घर है. Like I wish I had a bungalow here. यहाँ पे भी कितने खूबसूरत बंगलोज है देखो तो वो एरिया ही काफ़ी अच्छा है मतलब सॉरी मैं एक्चुअली ईयरफोन्स का माइक यूज़ कर रही हूँ मुझे ऐसा पकड़ना पड़ रहा है क्योंकि द थिंग इज़ दैट मेरा जो मेन माइक है उसका जो कनेक्टर है आईफोन में नहीं जाता है वो मेरा खो गया है तो यहाँ से आगे एक स्ट्रेच जाता है पूरे रेजिडेंशियल एरिया का हमें अभी राइट जाना है वी आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन बिकॉज़ हमें जाना है सिटी सेंटर की तरफ यहाँ से होता है ब्रिज चालू तो हम अभी ब्रिज में एंटर करने से पहले आई एम गोइंग टू शो यू अ ब्यूटीफुल प्लेस ओवर हियर दिस इज़ अ ब्यूटीफुल जॉगिंग एरिया तो ब्रिज चालू हो चुका है हम बस चल रहे हैं काफ़ी सुंदर है नज़ारा ये है वो छोटी सी रिवर and this river connects to a very big river just थोड़े आगे there are small gaps over here and I'm really scared of them maybe डैम के ऊपर जो ब्रिज होते हैं मोस्टली उसमें तो बहुत सारे गैप्स होते हैं like I get so scared of them because I feel like मेरा फ़ोन गिर जाएगा मैं मेरा चप्पल या कुछ भी गिर जाएगा पता नहीं क्यों I'm so scared हेलो तो ब्रिज जस्ट ख़त्म हो गया है और यहाँ से चालू होता है खतरनाक रास्ता the place which I am really scared of because I am scared of jungle but यहाँ से एक छोटा सा रास्ता है just to go down river के साइड चलो यहाँ देखते हैं साइड से रिवर जा रही है मैं कभी गई नहीं हूँ ये साइड ओके सो ऐसा है वो ब्रिज नीचे से मैं यहाँ कभी आई नहीं हूँ ये बहुत ही नीचे का एरिया है वैसे डरने जैसी कोई बात नहीं है सब सही है एंड मैं बस एक्सप्लोर करने वाली हूँ अब मैं समझ में कहाँ आ रही हूँ कि एग्जैक्टली लेफ्ट में है फुटबॉल का प्लेग्राउंड यस तो ये जस्ट साइकिलिंग रोड है ये ओके फॉर यू गाइज आई हैव ट्राइड दिस आई डोंट नो व्हाट इट इज़ लाइक इट्स जस्ट अ नॉर्मल रोड Now I have taken a U-turn, planning to go back because हमें कहीं और जाना है हम सिटी सेंटर जाने वाले थे तो मैं रिटर्न तो आ गई हूँ अभी हम लोग हमारे वे पे जाने वाले हैं पर उसके पहले मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ रिवर में जाने का एक रास्ता है सो मैंने कभी ट्राई नहीं किया बट चलो चलते हैं एक्सप्लोर ओके वो कैमरा हिलने वाला है बहुत मम्मी ओके बहुत ही स्लोप था क्योंकि मुझे लगता है पानी यहाँ आता ही होगा डेफिनेटली जब बारिश होती होगी तो ऐसा कुछ है ये रिवर सो इट्स बेटर टू गो या व्हाट डू यू थिंक ठीक ओके आई एम जस्ट गोइंग टू रीच ओके इट्स जस्ट 1 week left and I have to shift and today I am coming and exploring this town तो
चलो चलते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं जिससे मैं स्कैर्ड टू वॉक इन द इवनिंग। दिस इज द वे। देखो पूरा जंगल है। ये एक और छोटा शॉर्टकट है सिटी सेंटर में जाने के लिए, बट आई ऑलवेज स्किप दिस प्लेस बिकॉज आई इट्स लाइक रियली टेरेबल टू climb the stairs. But for you all, I'm going to climb these stairs. Let's do it together. Okay. तो ये ऐसा है. It's a bench to sit, and there is this place. So this is the door from where we came now. Do you guys want me to enter this church just to see how it is? Even the compound, let's see. I'm coming out of the church. I clicked a video inside, but I'm not going to upload this church video on YouTube. It's something very sacred. But let's explore the other places. So we are heading towards the city center. It's a small town, not a big city. So don't expect big malls over here. There is a small street and we are going to enter that. Look how cute it is. There is a slope here. I haven't been here. This is the first time I'm coming here, but let's explore together. Such beautiful houses. यहाँ तो मैं आती हूँ हर टाइम कुछ ना कुछ बाय करने के लिए. कैन सी और एक चर्च. I don't know how many churches are here, but in every 10-20 steps you will find a church. We are going to reach this beautiful bridge. It's a small place right next to the bridge, and we are going to check what it is. Okay, beautiful. And there's a restaurant there. So I'm little bit tired now because I'm so thirsty. I have Mirinda with me. I forgot to carry my water bottle. I just have this Mirinda. But पानी का काम तो पानी ही कर. Can you believe these all toys are from 12th and 13th century and it has been securely kept here? Now we are crossing this street restaurant lane and it's totally crowded. I was crossing the street where there were so many restaurants next to me on the road street. On the street there were so many restaurants and it doesn't look good me capturing a video over there because it was full. Let's continue now. Let's cross this road and go to that place. Okay, I'm not an expert in doing vlogging. I really don't know what to speak while doing vlogging, but I'm just blabbering something, just trying to entertain you guys.
Okay, so now you see this is the river. एंड सो इसके पहले हम लोग जो स्मॉल रिवर में गए थे वो दैट्स अ स्मॉल रिवर विच मीट्स दिस रिवर एंड दिस रिवर मीट्स अनदर रिवर विच इज़ लाइक 3-4 kilometers from here and I'm not going to walk till there. So that is a very big river. And this river connects different European countries. That's the specialty of this. Now we are on the main road and this road connects the express highway. Now I'm going to show you the railway station of this pretty town. So that's all. Let's go home. Hello guys, so that's all for today. My vlog is done. My video is complete. That I made a mistake where I actually thought I made my mind that I will look in the camera, but at the end I ended up looking on the screen. I'll make sure in the next video this doesn't happen. And the second thing I want to tell you that today I was using iPhone earphones. So I was not having the iPhone connector where I can connect this mic. Maybe that would have caused some disturbance in the video studio. I'll try and make sure I get a new iPhone connector. So that's all for today guys. I tried my best to entertain you. Please show some love, and if you like my video, please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon. So see you soon in the next video. Till then, take care, stay safe, bye.